Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss the paper MMPF002 Capital Investment and Financing Decisions. As you know, the subject contain three block 1, 2, and 3. Block 1 contain three units. Unit 1, nature of long-term financial decision, I have already discussed in previous class. So today I am going to discuss Unit 2, that is cost of capital. So this unit basically practical unit, then how to compute cost of different capital like debenture, bonds, equity share, preference share, etc. And know what is overall cost of capital, that is also called weighted average cost of capital. So this unit contains certain objectives like provide conceptual understanding of the cost of capital and its variants. Second, illustrate the computation of cost of specific courses of long-term finance like long-term debt and debenture, preference share, equity shares, and retained earning. Discuss and illustrate the various weighting approach and the weighted average cost of capital. It is also called WACC. And last one is examine the utility of cost of capital. So these are the objective of this unit. A structure of these units contain introduction, components of cost of capital, classification of cost of capital, computing cost of capital of individual components, cost of long-term debt, cost of preference capital, cost of equity capital, cost of retained earning, weighted cost of capital, significance of cost of capital, some conceptions about the cost of capital. So these are the structure of these units. So introduction part of these units are cost of capital. What is cost of capital? Cost of capital is the minimum rate of return that a business must earn before generating value. Before a business can turn a profit, it must at least generate sufficient income to cover the cost of the capital it uses to fund its operations. This consists of both the cost of debt and the cost of equity used for financing a business. A company's cost of capital depends to a large extent on the type of financing the company chosen to rely on its capital structure. So cost of capital refers to the minimum rate of return that a firm must earn on its investment so as to keep the value the enterprises. In fact, it represents the rate of return which the firm must pay to suppliers of capital for use of their funds. The following are the basic characteristics of cost of capital. So first is cost of capital is really a rate of return. It is not a cost as such. Second, a firm's cost of capital represent minimum rate of return that will result in at least maintaining the value of its equity share. Third one is cost of capital as a rate of return is calculated on the basis of actual cost of different components of capital. Next one is it is usually related to long-term capital funds. Cost of capital has three components.
First is called return at zero risk level. Second is premium for business risk. And third one is premium for finance risk. So cost of capital is very important concept because every capital has a cost. कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई भी कैपिटल विदाउट कॉस्ट नहीं होता है. एवरी कैपिटल हैज अ कॉस्ट. हर एक कैपिटल का अपना एक कॉस्ट होता है. यू हैव टू पे, जो कंपनी हैव टू पे. अगर कंपनी ने कैपिटल को रेज किया है किसी भी सोर्स के थ्रू, तो वहां पे आपको रिटर्न वहां पे आपको पे करना होगा, इवन इंटरेस्ट और डिविडेंड एटसेट्रा. So classification, next topic, you can see on the screen classification of cost of capital. So classification of cost of capital is first explicit cost and implicit cost. Second one is average cost and marginal cost. Third one is future cost of capital. And fourth is a specific cost and combined cost. Explicit cost and implicit cost. It's very important cost because explicit cost are out of pocket cost. It is also called out of pocket cost for a firm. For example, payment for wage and salaries, rent or materials, etc. So explicit cost means simple, आप ये समझ सकते हैं कि वैसा एक्सपेंस जिसके लिए आपको क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट है. सपोज आपको सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, तो इसके लिए आपको क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तुरंत आपके पॉकेट से ये कैश पेमेंट करना पड़ेगा. इसीलिए इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. दैट मीन्स कि आपके पॉकेट से कैश चला जाएगा. And second one is implicit cost. Or implicit cost are a specific type of opportunity cost. The cost of resources already owned by the firm that could have been put to some other use. For example, an entrepreneur who owns a business could use her labor to earn income at a job. So implicit cost, आप ये समझो कि वैसा कॉस्ट जिसके लिए अभी आपको क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. लाइक एग्जांपल में आप दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओनर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कंपनी में, उस पे जो कॉस्ट पे करना होता है, उसका जो इंटरेस्ट देना होता है, वो एक्चुअली में हमें अभी नहीं देना होता है, बल्कि कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं. ओनर्स कैपिटल को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. तो अभी क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. जब तक वो ओनर उस बिजनेस में बना रहेगा तब तक उसको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जिसके लिए क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट सीधा इसका रिवर्स आप देखेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए आपको क्विक पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. सो एवरेज कॉस्ट is the cost per unit manufactured in a production run. It represents the average amount of money spent to produce a product. This amount can vary depending on the number of units produced. And second one is marginal cost. I have already discussed in previous class what is marginal cost. Marginal cost is the change in total production cost that comes from making or producing one additional unit. One additional unit को प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट इनकर होता है, that is called marginal cost. So third one is future cost of capital. Future cost of capital, it is the expected cost of financing the proposed project. Expected cost is calculated on the basis of previous experience. It is an important cost in project planning and deciding in future financial commitments.
So last one is a specific cost and combined cost. Combined cost is also called overall cost of capital. So combined cost or a specific cost of fund is termed as a specific cost. Cost of a specific source of fund is termed as a specific cost of capital. Cost of debt, cost of preference capital, cost of equity, and cost of retained earning are all example of a specific cost of capital. Thus, a specific cost of capital is the cost that a company incurs for the fund raised through a specific source, like debt source, equity source, long-term loan from financial institutions and banks, etc. So next one is overall cost or combined cost. Overall cost or combined cost of capital is the weighted average cost of capital. Hence, the overall cost of capital is also termed as WACC or simply average cost of capital. Thus, overall cost of capital is cost which the company incurs for its total financing. The weight may be assigned either on the basis of book values or on the basis of market values. So these are the cost of capital classification. And next topic is computing cost of capital of individual components. It is a very important topic for this unit. How to compute cost of different capital like long-term debt and debentures, preference share capital, equity share capital, retained earning. कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को एक्सप्लेन करना है. कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दैट मीन्स अगर आपने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाइक अ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई से अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई कैपिटल रेज किया है आपने, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट रिप्रेजेंट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न that must be earned on debt financed investment if the firm's value is to remain intact. Long term debt may be issued at par, at premium, at discount. As you know very well, कंपनी जब भी कोई सिक्योरिटीज, डिवेंचर, इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसका एक कोटेड प्राइस होता है. लाइक एक डिवेंचर का वैल्यू कंपनी ने कोट किया है 100 रुपीज, बट कंपनी को ये राइट है कि उस डिवेंचर को वो या तो प्रीमियम पे इशू कर सकता है या पार वैल्यू दैट मींस कोटेड प्राइस, या उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकता है. ये कंपनी अपने पास राइट रखती है. तो कंप्यूटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में सबसे पहले फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. So you can see on the screen the formulas for computing the cost of long-term debt at par is KD. KD stands for cost of debt is equal to 1 minus T into R, where KD cost of long-term debt, T marginal tax rate, R stands for debenture interest rate, is also known as tax shield. 1 minus T is also called tax shield because you have to pay interest at any cost in case of debenture. बट जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं डिवेंचर के अगेंस्ट में, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आपके प्रॉफिट से डिडक्टेबल होता है. प्रॉफिट से आप उसको इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं. सो रिजल्ट ये होता है कि आपका प्रॉफिट मिनिमम हो जाता है उस इंटरेस्ट की वजह से, और जितना उस इंटरेस्ट की वजह से आपका प्रॉफिट हैम्पर हुआ है उतने प्रॉफिट पे आपका टैक्स वो सेव कर लेता है. इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स शील्ड, मीन्स टैक्स बेनिफिट. टैक्स को आपको रिड्यूस कर देता है इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट
आपके प्रॉफिट से डिडक्टेबल होता है, और प्रॉफिट जितना कम होगा आपको टैक्स उतना ही कम देना होगा. So just example, if a company has issued 10% debenture and the tax rate is 60%, the cost of debt will be, it is easy, फॉर्मूला है, उस पे आप डेटा को पुट करेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा. दैट इज 1 माइनस टैक्स रेट इज 60%. तो 60% को हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं. अगर परसेंटेज को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो 0.6 हो जाएगा. तो 1 माइनस 0.6 दैट इज बचेगा आपका 0.4 इंटू 10. 0.4 इंटू 10 इज इक्वल टू 4%. तो आंसर इज 4% कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिवेंचर्स आर issued at premium or discount, the cost of the debt should be calculated on the basis of net proceeds realized. सो नेट प्रोसीड मीन्स कंपनी जिस रेट से मार्केट में इशू कर रही है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रोसीड. कंपनी का पार वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन वो इशू कर रही है डिस्काउंट पे 10%. तो 100 रुपीज पार वैल्यू है, लेकिन 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है. दैट मीन्स 10 रुपीज आपका लेस हो जाएगा. दैट इज नेट प्रोसीड इज 90 रुपीज. So the formula has two types. First, after tax computation, and second one is before tax computation. आपको कंपोजिशन, दो कंपोजिशन में पूछ सकता है क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बिफोर टैक्स निकालने के लिए पूछ सकता है. सो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला यहां पे है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड मींस कंपनी जिस रेट से मार्केट में उसको इश्यू कर सकती है, वेदर इट इज प्रीमियम और डिस्काउंट. Where KD cost of debt after tax, I stands for annual interest payment, NP net proceed of loan, T is equal to tax rate. But you want to calculate cost of debenture before tax, then formula is on your screen. KD is equal to interest by NP. You can see that here I के बाद आप देख रहे हैं 1 माइनस टी को रिमूव कर दिया गया है. दैट मीन्स टैक्स शील्ड का बेनिफिट यहां पे नहीं दिया गया है, बिकॉज कि ये बिफोर टैक्स कंप्यूटेशन है. जब भी आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन होता है तो आप टैक्स को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज बिफोर टैक्स में टैक्स को कंसीडर आप नहीं करेंगे. सो यहां पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन आपको बताया गया है, एग्जांपल इफ कंपनी हैज इश्यूड 10% डिवेंचर्स and the tax rate is 60%, the cost of debt will be 1 minus tax rate. यहां पे नहीं होगा, तो सिंपली 1 माइनस टी को हम रिमूव कर देंगे तो 0 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा. 1 इंटू 10 दैट मीन्स 10%. So second example on the screen is a company issues 10% irredeemable debenture. Because debenture has different types, I have discussed in previous class, like redeemable debenture, irredeemable debenture, convertible debenture, non-convertible debenture, secured debenture, unsecured debenture. बट जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बस दो ही जो डिवेंचर है, लाइक इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल, दोनों का ही हम निकालते हैं, और बाकी किसी का कॉस्ट हम नहीं निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं. सो रिडीमेबल मीन्स एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी को उसका प्रिंसिपल अमाउंट डेट होल्डर को वापस करना होता है, रिडीम करना होता है. बट इरिडीमेबल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आपने इरिडीमेबल डिवेंचर परचेज किया है तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका जो पैसा है लॉक इन पीरियड में चला जाएगा. कंपनी कभी भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करेगी. टाइम टू टाइम सिर्फ वो आपको इंटरेस्ट पे करेगी, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वो रिटर्नेबल नहीं होता है.
सो नीचे जो एग्जांपल है, अ कंपनी इश्यूज 10% irredeemable debentures of ₹1 lakh. The company is in 60% tax bracket. That means tax rate 60% है। और यहाँ पे जो ई रिडीमेबल डिवेंचर है, बिकॉज ई रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हैं। अब आफ्टर टैक्स कंप्यूट करना है या बिफोर टैक्स कंप्यूट करना है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। सो अगर हम बिफोर टैक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो कंपनी 1 लाख का डिवेंचर इश्यू की है और 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो 1 लाख का 10% जब आप निकालेंगे तो 10,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड दैट मींस 1 लाख रुपीज का डिवेंचर इश्यू हुआ है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू आपका अप्रॉक्स 10% आएगा आंसर इसका। लेकिन अगर आप आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का यूज करना होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप डेटा पुट करेंगे तो इंटरेस्ट की जगह पे आपको पुट करना होगा 10,000 रुपीज, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज 60%, उसको आप 0.6 लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एनपी दैट इज 1 लाख। तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4 रिमेनिंग में आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको डिवाइड करना होगा 1 लाख से, तो वो आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। सो सेकंड वन इज रीडीमेबल डिवेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन आता है तो आपको प्राइमा फेशी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो रीडीमेबल है या इरीडीमेबल है। अगर आपको इरिडीमेबल दिया है दैट मींस कि उस क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ होगा। मैच्योरिटी पीरियड दैट मींस कि कितने साल के लिए इश्यू किया गया, एक लिमिटेड पीरियड होता है, 10 इयर्स 5 इयर्स, ये कुछ भी हो सकता है। तो जिस क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड इन्वॉल्व है दैट इज रिडीमेबल, और जिस क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड अवेलेबल नहीं है दैट इज कॉल्ड इरिडीमेबल। सो रिडीमेबल का जो फॉर्मूला है फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, इट इज कैलकुलेटेड एज, इसको भी आप दो तरीके से आता है क्वेश्चन इसमें, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट के बाद 1 माइनस टी दैट इज टैक्सेड बेनिफिट आपको मिलेगा आफ्टर टैक्स, बट बिफोर टैक्स में 1 माइनस टी स्किप होता है और बाकी जो भी फॉर्मूला है एज इट इज वो बना रहेगा। So you can see on the screen cost of date or cost of redeemable date का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का आप देख रहे हैं। I stands for interest rate bracket open 1 minus T stands for tax rate plus RV stands for redemptions value। कंपनी किस रेट पे वापस ले रही है आपका डिवेंचर, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशंस वैल्यू। बेसिकली पार वैल्यू इज ट्रीटेड एज रिडेम्पशंस वैल्यू। पार वैल्यू दैट मींस जो कोटेड प्राइस है, कंपनी ने जो कोट किया है कि एक डिवेंचर इज इक्वल टू 100 रुपीज। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ना रहे दिया हुआ रिडेम्पशंस वैल्यू से रिलेटेड, तो आप रिडेम्पशंस वैल्यू की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप नेट पार वैल्यू को ही कोट करेंगे, दैट इज 100। अगर आपका पार वैल्यू 100 दिया हुआ है तो सो माइनस एनपी, एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कंपनी के पास राइट है कि पार वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन कंपनी के पास राइट है कि वो आपको डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है, पार वैल्यू पे इश्यू कर सकती है। तो कंपनी जिस रेट पे डिवेंचर को इश्यू की है मार्केट में, चाहे वो पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, इट में भी डिस्काउंट, तो जिस रेट से भी आपको इश्यू किया गया है आपको वही यहां पे पुट करना है, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, 5 इयर्स हो सकता है। अब कंपनी कितने सालों के लिए इश्यू किया है डिवेंचर उस पर डिपेंड करेगा कि मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 इयर्स है या 10 इयर्स है। सो वहां पे आप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैच्योरिटी पुट कर देंगे और पूरे को डिवाइड करते हुए
रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपका पूरा फॉर्मूला है वो रिडीमेबल डिवेंचर का है आफ्टर टैक्स। अब सिंपली अगर आप बिफोर टैक्स कोई कंप्यूटेशन करने बोल दिया है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर बिफोर टैक्स, सो यहां पे सिर्फ टैक्स शील्ड का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। दैट मींस 1 माइनस टी इंटरेस्ट के बाद जो 1 माइनस टी आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, उसको आप रिमूव कर देंगे, बाकी जो फॉर्मूला है एज इट इज वो बना रहेगा। दैट इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिफोर टैक्स फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस redemptions value minus net proceed by n divided by rv plus np by 2। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है कि वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर वो डिफाइन हो गया तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे जाना है कि वो आफ्टर टैक्स पूछ रहा है या बिफोर टैक्स पूछ रहा है। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बिफोर टैक्स का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। सो एक एग्जांपल है, अ फर्म इशूड 1000 10% डिवेंचर्स each of ₹100 at 5% discount. The debenture are to be redeemed in the beginning of 11th year. That means 10 year. Maturity period इसका 10 year है, जो कि beginning से start होकर 11th year तक जाएगा। तो 1 ईयर को यहाँ पे स्किप करते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि बिगिनिंग से लिया गया है तो 1 साल का ये मैच्योरिटी नहीं लेंगे, हम 10 ईयर्स ही लेंगे यहाँ पे। द टैक्स रेट इज 50%। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, रिडीम्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, रिडीम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर, दैट मींस 10 ईयर मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ इन्वॉल्व है, दैट मींस ये क्वेश्चन पैटर्न हो गया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट का, रिडीमेबल डिवेंचर का। अब यहां पे टैक्स रेट जब इंक्लूड है तो आपको आफ्टर टैक्स ही निकालना है। क्वेश्चन के पैटर्न में अगर आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स आपको कोट किया हुआ नहीं है तो आप वहां पे आफ्टर टैक्स कंप्यूट करेंगे जब आपके क्वेश्चन में टैक्स रेट इंक्लूड रहता है। अगर टैक्स रेट इंक्लूड नहीं है तो आप बिफोर टैक्स ऑलवेज कंप्यूट करेंगे। अगर क्वेश्चन का पैटर्न ही आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स करके पूछा गया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना होगा। सो इस क्वेश्चन के बेस पे हम डेटा पुट करवाने की कोशिश करते हैं। ए फर्म इशूड 1000 10% डिवेंचर ईच ऑफ ₹100। तो एक वन थिंग यहां पे और भी आप याद रखेंगे कि अगर आप पूरे होल अमाउंट पे भी आप अगर कंप्यूटेशन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर बिल्कुल सेम होगा अगर आप एक यूनिट पे भी करते हैं। यानी आप एक यूनिट पे कॉस्ट निकालें या पूरे अमाउंट पे आप कॉस्ट निकालें, आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। सो यहां पे हम एक यूनिट पे अगर निकालते हैं तो एक यूनिट का रेट जो है वो दिया हुआ है 100। तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो है 10%। तो आप 100 का 10% कंप्यूट करेंगे इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट के जगह पे हो जाएगा 10 रुपीज। आई जहां पे स्टैंड कर रहा है वहां पे आप लिखेंगे 10 रुपीज, प्लस अगर आफ्टर टैक्स है निकालना तो 1 माइनस टी कोट करेंगे वहां पे, तो 1 माइनस टी हो जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट आपका 50% दिया है, दैट इज 0.5, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। अगर रिडेम्पशन वैल्यू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में तो रिडेम्पशन वैल्यू को हम पार वैल्यू की तरह ही ट्रीट करते हैं। दैट मींस पार वैल्यू इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 रुपीज। तो आप रिडेम्पशन वैल्यू की जगह पे 100 रुपीज आप वहां पे ऐड कर दीजिए, माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मींस कंपनी ने किस रेट से एक्चुअल में इशू किया है। पार वैल्यू तो 100 रुपीज है, बट कंपनी इशू किस रेट से किया है, दैट्स मैटर। सो कंपनी आप देख रहे हैं कि 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, ईच ऑफ ₹100 एट 5% डिस्काउंट, दैट मींस 100 रुपीज का जो डिवेंचर है वो 5 रुपीज डिस्काउंट होकर 95 में इशू हुआ है मार्केट में, यानी कंपनी ने उसे 95 रुपीज में इशू किया है मार्केट में।
तो नेट प्रोसीड जो होगा आपका 95 हो जाएगा। नेट प्रोसीड की जगह पे 95 आप रखेंगे, डिवाइडेड बाय एन, एन दैट मींस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इन द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर दिया है, दैट मींस कि यहां पे 10th ईयर हम कंसीडर करेंगे। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे देगा मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, तो डायरेक्टली हम वही वाला रखेंगे। लेकिन यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ 11th ईयर का मतलब है कि 10th ईयर यहाँ पे कोट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मैच्योरिटी जो 10 ईयर है वो इनके जगह पे आप पुट कर देंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे, रिडेम्पशन वैल्यू वही रह जाएगा 100 प्लस एनपी आपका जैसा अभी आपने निकाला 95 डिवाइडेड बाई 2। जब ये पूरे कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का आउटपुट मिल जाएगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका होगा। सो वैल्यू आपको पुट करना होगा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर कि कहां कहां पे डिस्काउंट पे, यहां पे अगर प्रीमियम पे इशू कर देता 5%, जस्ट लाइक यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस रहता, माइन्यूटली चेंज रहता, 5% डिस्काउंट की जगह पे 5% प्रीमियम रखता, तो वहां पे क्या होता कि 105 रुपीज में मार्केट में इशू हुआ है, तो एनपी के जगह पे आपको 105 हो जाएगा। यहां एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इफ अंडरराइटिंग कमीशन और कॉस्ट ऑफ इशू और फ्लोटेशन कॉस्ट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, then it is deductible from net proceed. It is very important information. I again repeat, if underwriting commission, cost of issue and flotation cost is given in the question, then it is deductible from net proceed. अगर अंडरराइटिंग कमीशन आप लोग जानते होंगे कि कंपनी इक्विटी इश्यू करती है तो इक्विटी को सेल करवाने के लिए एजेंट को अपॉइंट करती है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटर। तो अंडरराइटर जितना इक्विटी शेयर कंपनी का सेल कराएगा उसके अगेंस्ट में उसे कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटिंग कमीशन अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड जो भी आया है उसमें से अंडरराइटिंग कमीशन को हम लेस कर देंगे। एंड सेकेंड, कॉस्ट ऑफ इशू, अंडरराइटिंग कमीशन के जगह पे आपको कॉस्ट ऑफ इशू दे सकता है, इट इज ऑल्सो डिडक्टेबल फ्रॉम नेट प्रोसीड, और फ्लोटेशन कॉस्ट दे सकता है। फ्लोटेशन कॉस्ट मींस इशूइंग कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की जगह पे भी आप नेट प्रोसीड को उससे माइनस करेंगे। सो ये तीनों में से कोई भी एक अगर आपको दिया हुआ है तो वो नेट प्रोसीड से लेस हो जाएगा। सो यहां पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इशू, और दूसरी बात एक बार और आप नोट कर सकते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट हो, अंडरराइटिंग कमीशन हो, कॉस्ट ऑफ इशू हो, कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन पार वैल्यू, दैट इज 100 रुपीज। आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, डजंट मैटर। जब भी आपको कोई भी परसेंटेज टर्म कंप्यूट करना है, इट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन पार वैल्यू, दैट इज 100, यानी 100 का 5%। सपोज अंडरराइटिंग कमीशन इज 5% गिवन इन द क्वेश्चन, देन 100 का 5% आपको निकालना पड़ता है अंडरराइटिंग कमीशन, दैट इज 5, और वो 5 रुपीज जो अंडरराइटिंग कमीशन आता वो नेट प्रोसीड से आपका लेस हो जाता। तो जो 95 इस केस में आपका नेट प्रोसीड है उसमें से 5 रुपीज और डिडक्ट हो जाता इफ अंडरराइटिंग कमीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो 90 रुपीज आपका नेट प्रोसीड आ जाता। तो ये कंप्यूटेशनल पार्ट है आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, बिफोर आफ्टर। रिडीमेबल का 2 पार्ट होगा, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स, और ई रिडीमेबल का भी 2 पार्ट आप देख रहे हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। एंड नेक्स्ट individual components is preference share, preference capital. It is also called hybrid share, hybrid capital, because the characteristics of equity and debt is both are included in this capital. So cost of preference share capital represents the rate of return that must be earned on preferred stocks financed investment to keep the
earnings available to residual stockholders unchanged. So cost of preference share is equal to, first formula, dividend divided by face value minus issue cost. So it is a simple formula to calculate cost of preference capital. Question contain dividend of preference capital, face value of this preference share, and issuing cost is also given in the question. So example, you can see on the screen, a company is planning to issue 9% preference shares expected to sell at rupees 85 par value. The cost of issuing and selling the share are expected to be rupees 3 per share. सो इस क्वेश्चन में आप डिविडेंड यानी 9% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि 9% उसको डिविडेंड मिलेगा जितना का प्रेफरेंस है. सो यहां पे एक्सपेक्टेड टू सेल 85 रुपीज पर वैल्यू दे रहा है. द कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग द शेयर आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 3 पर शेयर. सो आप इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग जब आप पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. एंड सेकेंड फॉर्मूला, that is cost of redeemable preference share. redeemable preference share means कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको कंपनी को प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट प्रेफरेंस होल्डर को वापस करना होगा. सो जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आपने देखा प्रीवियस में जो हमने डिस्कस किया, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसका भी फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं. बस एक चेंजेस होगा कि आप डिवेंचर में इंटरेस्ट को पुट करते हैं, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट की जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है. तो यहां पे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपीएस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी. पीडी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, bracket open, bar minus t, t stands for tax rate, plus rb, rb stands for realization value, redemptions value, minus net proceed on issue of preference share divided by n, n for number of years of maturity period, and पूरा को डिवाइड करेंगे rb plus np by 2. सो बाकी जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं डिवेंचर से बिल्कुल मैच कर रहा है. सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पे हम कोट करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है. सो ये आफ्टर टैक्स है. अगर इसी में आपको बिफोर टैक्स पूछेगा तो बिफोर टैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा 1 माइनस टी, जो आपका टैक्सिल्ड बेनिफिट है वो वहां से रिमूव हो जाएगा. तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी बाई 2. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स. सो एग्जांपल, a firm issued 1000 10% preference share each of rupees 100 at 5% discount. The preference share are to be redeemed in the beginning of 11th year. Beginning of 11th year, that means 10 year. The tax rate is 50%. So जब आप पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला को तो बिल्कुल डिवेंचर की तरह ही ये आप यहाँ पे पुट करेंगे. अगर आपसे बिफोर टैक्स पूछा है तो प्रेफरेंस डिविडेंड के जगह पे आप वहां पे 10 रुपीज रख देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज कि 100 रुपीज एक का वैल्यू है और 10% आपको उस पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो रहा है. सो 10 प्लस आरबी के जगह पे आप वहां पे, चूंकि यहाँ पे रिडेम्पशंस वैल्यू से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो रिडेम्पशंस वैल्यू इज आल्सो कैलकुलेटेड एज पार वैल्यू. तो आप रिडेम्पशंस वैल्यू की जगह पे पार वैल्यू को कोट कर देंगे, दैट इज 100 रुपीज माइनस नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड मींस कंपनी किस रेट से इशू की है, तो यहां पे 100 रुपीज पार वैल्यू आप देख रहे हैं क्वेश्चन में एट 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, दैट इज आप 95 रुपीज में मार्केट में कंपनी ने इसको इशू किया है, दैट इज 95. 100 minus 95 divided by number of years of maturity, that is
10 year divided by RB plus NP by 2. So next formula is cost of equity. Every capital has a cost. So cost of equity capital is the cost of the estimated stream of net capital outlays derived from equity sources, according to E.W. Walker. According to James C. Van Horn, cost of equity capital can be thought of as the rate of discount that equates the present value of all expected future dividends per share, as perceived by investors at the margin as in the current market price per share. In a nutshell, it is the discount rate which equates present value of all expected dividends in future with net proceeds per share current market price. It represents the minimum rate of return that must be earned on new equity stock financed investment in order to keep the earnings available to the existing residual owners of the firms unchanged. So cost of equity is very important component of cost of capital. Prima facie, you can see equity capital has no cost, but it is wrong, because the expectation of equity shareholder is the cost of equity. कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि उसको कुछ रिटर्न मिल सके, तो दैट एक्सपेक्टेशन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी. अगर आप एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हैं तो आप कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर को आप खो देंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लैप्स करके वो आपके यहां इन्वेस्ट किया है. कहीं ना कहीं उस पैसे को वो एफडी में डाल देता तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता, बट वहां से विड्रॉ करके आपकी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट किया है. दैट मींस उसका एक एक्सपेक्टेशन है और वही एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है. So cost of equity capital is by far the most difficult to measure because of the following reasons. First, the cost of equity is not the out-of-pocket cost of using equity capital, because you can pay dividend whether your company earns a profit. बट अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो उस केस में आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं उसे. सो सेकेंड वन इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स एज एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स. वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, very difficult to estimate, because the expectation of different equity shareholder is vary according to their perception, according to their desire, etc. The relationship between market price with earnings is known. Dividend also affect the market value. Which one is do we consider? That is also called wealth maximization. The increment of market value of equity is called wealth maximization. शो इक्विटी शेयर का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपके वैल्यू को भी वो अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बेसिकली देयर आर 4 मेथड अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फर्स्ट इज कॉल्ड डिविडेंड प्राइस अप्रोच, सेकंड इज अर्निंग प्राइस अप्रोच, third is yield approach, and fourth is CAPM, that is also called capital asset pricing model approach. So according to dividend price approach, cost of equity is equal to dividend per share divided by market price per share. Dividend per share
It is also declared by the management, the top management of the company. तो आपके क्वेश्चन के पैटर्न में डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ रहेगा और इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया हुआ रहेगा। बट आप देख रहे हैं कि यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो दोनों फैक्टर यूज किया गया है बोथ आर वेरिएबल। तो वेरिएबल फैक्टर के बेस पे जब कोई आप आउटपुट निकालेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। सो स्टेबिलिटी को लाने के लिए यहां पे कांस्टेंट ग्रोथ रेट को यूज किया जाता है, दैट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर जी। So next formula is cost of equity is equal to DPS, dividend per share, bracket open 1 plus G, G stands for constant growth rate, divided by market price per share and बाहर की ओर plus G रहेगा, constant growth rate. So constant growth rate stability provide करती है cost of equity को। यहां पे एक बात और आप याद रखेंगे कि if underwriting commission, cost of issue and flotation cost is given in the question in case of equity share, so it is deductible from market price per share. अगर आप डिवेंचर की बात करते हैं, डेट कैपिटल की बात करते हैं, तो इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम नेट प्रोसीड, बट इन केस ऑफ इक्विटी इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम मार्केट प्राइस पर शेयर if it is given in the question. So next method is earning price approach. This approach contains two factors, earning per share and market price per share, and both factors are variable. So the result of cost of equity is also vary according to this factor. It is not stable in this formula. Cost of equity is equal to earning per share divided by market price per share. Earning per share it is given in the question and market price per share it is also given in the question. So दोनों को पुट करके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम फाइंड कर लेंगे, बट स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी क्योंकि दोनों फैक्टर यहाँ पे स्टेबल नहीं है। सो कांस्टेंट ग्रोथ रेट यूज करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्विटी शेयर के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालने में कांस्टेंट ग्रोथ रेट यूज हुआ है, तो आप कांस्टेंट ग्रोथ रेट यूज करेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ईपीएस बाय एमपीपीएस। तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट अगर अवेलेबल है, इफ कांस्टेंट ग्रोथ रेट इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन, देन फॉर्मूला सेकंड इज अप्लाई फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। So cost of equity is equal to earning per share bracket open 1 plus G divided by MPPS plus constant growth rate बाहर की ओर रहेगा। तो यहां पे भी अगर flotation cost given in the question, then it is deductible from market price per share in case of equity share. So next example, the market price of equity share is rupees 15 and dividend rate is 15%, par value rupees 10 per share. So dividend is always calculated on par value. Always remember this statement. Dividend is also computed on par value. Par value जो भी होगा इक्विटी शेयर का उसी पे आप कंप्यूट करेंगे, नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे कभी भी कैलकुलेटेड नहीं होता है डिविडेंड। So in this example, the market price of equity share is rupees 15 and dividend rate is 15%, par value of rupees 10 per share. तो 10 per share एक इक्विटी का रेट है, तो उसका 15% आप निकाल लीजिए डिविडेंड, दैट इज 1.5 रुपीज। तो डिविडेंड पर शेयर 1.5 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज 15, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 15 जो भी आउटपुट आएगा, दिस इज योर आंसर। And example 2, this question include constant growth rate. So formula will be changed according to your question pattern. The market price of equity share is rupees 15 and dividend rate is 15%. Par value rupees 10 per share and constant growth rate is 5%. So in this question,
formula will be applied second formula, that is dividend per share 1.5 bracket open 1 plus g constant growth rate, that means 0.05, 5% को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0.05 नॉट 0.5, 0.5 is 50%, not 5%. So 0.05 divided by market price per share, that is 15, and plus constant growth rate, that is 0.05. So जो भी आउटपुट आएगा, your answer. Third, yield approach, and fourth, CAPM, that is also called capital asset pricing model. It is an abbreviation form. Capital asset pricing model. So according to this method, the cost of equity formula is RF plus BRM minus RF, where RF is equal to rate of return on market securities, that is also called risk-free rate. B stands for beta coefficient, RM stands for rate of return on market portfolio, and RF is equal to rate of return on market securities, that is also called rate-free return. So example 3, beta is 1.5, rate of return on market portfolio is 10%, rate of return on risk-free securities is 8%. So simply आपको इस क्वेश्चन से बस डेटा को फॉर्मूला में पुट करना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रिजल्ट ले लेना है. सो यहां अगर फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो यहां पे आंसर होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट सिक्योरिटी, दैट मींस रिस्क फ्री रेट जो होगा वो आपका है 8%, दैट मींस 0.08 आरएफ के जगह पे पुट होगा प्लस बीटा कोएफिशिएंट, दैट मींस 1.5 ब्रैकेट ओपन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दैट इज 10%, that is 0.10 minus rate of return on market securities, that is 8%, 0.08. So जो रिजल्ट आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर होगा. नेक्स्ट टॉपिक on your screen, the limitation of earning price approach. Earnings do not represent real expectation of shareholder, because different perception of different shareholder is vary according to person to person. Second, earnings per share is not constant, because जो भी फैक्टर यूज किया जाता है आप कॉस्ट को निकालने में वो दोनों क्या है, वेरिएबल है. सो कांस्टेंट नहीं हो सकता है अर्निंग पर शेयर. इट इज वेरी according to market condition, according to market situation, according to company performance. Next one is which earnings, current earnings or average earnings, not clear. किस तरह का earnings है, current earning, average earning, ये clear नहीं हो पाता है. ये इसीलिए यहाँ पे एक limitations earning price approach का यहाँ पे है. The next topic is the method is useful in the following circumstances. The firm does not have debt capital. All the earnings are paid to the shareholders. There is no growth in earning. जहां पे डेट कैपिटल अवेलेबल नहीं है वहां पे ये फॉर्मूला यूजफुल होगा. ऑल द अर्निंग्स आर पेड टू द शेयर होल्डर्स. जितने भी अर्निंग्स होते हैं उनको आप शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं. दैट मीन्स कि रिटेन अर्निंग यहाँ पे नहीं है, आप रिटेन नहीं करते हैं. जितना प्रॉफिट होता है सारा का सारा प्रॉफिट आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं. वैसे फर्म में यूजफुल ज्यादा रहेगा अर्निंग प्राइस अप्रोच. एंड थर्ड, देयर इज नो ग्रोथ इन अर्निंग्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. अर्निंग्स is a variable factor. So according to market condition, earning is vary time to time. So next topic, cost of retained earning. I have discussed in previous class what is retained earning. तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी रिसीव करती है उसमें से कुछ पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देती है और कुछ पार्ट को वो रोक लेती है कंपनी में. दैट इज जो रोक रही है, दैट इज रिटेन जो कर रही है प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग.
ये हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हो कंपनी, तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो अपने अंदर रोक के रखती है, डिक्लेयर नहीं करती है डिविडेंड। So corporate managers and some analysts normally consider the funds retained in the firm as cost-free funds because it does not cost anything to the firm to make use of a part of its earnings not distributed to the shareholders. However, this is not true बिकॉज जो रिटर्न अर्निंग है वो इक्विटी का ही क्या है, इक्विटी का ही कंट्रीब्यूट, इक्विटी को ही देना था, लेकिन आपने उसको रिटेन कर लिया। दैट मीन्स वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला यूज होता है वही फॉर्मूला आपको रिटेन अर्निंग में भी यूज करना होगा, क्योंकि वो जस्ट लाइक इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। So it definitely cost the shareholders something, and this is an opportunity cost representing sacrifice of the dividend income which the shareholders would have been otherwise received it and invested the same elsewhere to earn a return thereon. Thus, the minimum cost of return earning is the cost of equity capital. So, cost of equity capital का जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो रिटर्न अर्निंग पे कर सकते हैं, उसी के थ्रू उसका भी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग फाइंड कर सकते हैं। So, weighted cost of capital. Every company wants to know what is the average cost of capital in this company. कंपनी डिफरेंट सोर्स से कैपिटल को लाती है, तो डिफरेंट सोर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट कितना होना चाहिए ये कंपनी जानने में इंटरेस्टेड होती है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको आपको बताता है कि टोटल कैपिटल का एक एवरेज कॉस्ट कितना लग रहा है कंपनी। So weighted cost of capital, also known as composite cost of capital, overall cost of capital, or weighted marginal cost of capital, is the average of the cost of each sources of funds employed by the firm properly weighted by the proportion they hold in the capital structure of the firm. So next topic on the screen is significance of cost of capital. The determination of the firm's cost of capital is important because first, cost of capital provides the very basis for financial appraisal of new capital expenditure proposals and thus serves as acceptance criterion for capital expenditure projects. Cost of capital helps the manager in determining the optimum capital structure of the firm. Cost of capital serves as the basis for evaluating the financial performance of top management. Cost of capital also helps in formulating dividend policy and working capital policy. Cost of capital can serve as capitalization rate which can be used to determine capitalization of a new firm. So last topic in this unit are some misconceptions about cost of capital. The cost of capital is a central concept in financial management linking the investment and financing decisions. A few misconceptions in this regard are as follows. The concept of cost of capital is academic and impractical. It is equal to the dividend rate. Retained earnings are either cost-free or cost significantly less than external equity. Depreciation has no cost. The cost of capital can be defined in terms of an accounting-based manner. If a project is heavily financed by debt, its weighted average cost of capital is low. So this unit contains in different concept and topics. So I will discuss in next class capital structure. It's very important topic for the next unit. So thank you for watching.